Very good morning, students. I hope you all are doing great and also revised your previous chapter. Today, we are going to start our chapter 2, which is Advanced Features of Windows 10. So, in this chapter, we will going to discuss in detail about Windows 10 and its various different features. So, without wasting any further time, let's start the chapter. The name of a chapter is Advanced Features of Windows 10, and the topics which we will discuss are Windows 10, Task View, Snap Layout, Microsoft Edge, fonts, customizing the taskbar, configuring the mouse, and configuring date and time. Before that, we have an amazing thought. You never fail until you stop trying. Now we have an activity which says write the steps to pin a program in taskbar. So our step 1 will be open the start menu. Step 2 will be find the program or application you want to pin. आप जिसको भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को पिन करना चाहते हो उसको आपको यहाँ पे फाइंड करना है. Then in step 3 you will right click on it, then in step 4 आप क्या करोगे, step 4 में आप चूज करोगे एक ऑप्शन, so you will click on pin to taskbar from the menu. Now moving forward, there is a girl who says, "Hi Mayank, I want to know more about Windows 10. Can you help me please?" Then he replies, "Yes Kavya, I will surely help you." He says, "In this chapter we will learn more advanced features of Windows 10." And he says, "We learned in previous class that Windows 10 is a multitasking operating system which was developed by Microsoft Corporation and which uses GUI interface to interact with the users." Now, moving forward, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप की है. विंडोज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स यानी कि पीसीज, ऑफर्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि जीयूआई, मल्टीटास्किंग फंक्शनैलिटीज, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज and support for several peripheral devices. So some of the well known versions जो हैं Windows के वो include करते हैं Windows 98, XP, Vista, 7, 8 and 10. Windows 11 जो है वो most recent version है which is released in 2021. Now Windows 10 क्या है, ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है from Microsoft that was released in 2016 and it is the most recent version of Windows operating system before Windows 11 which was released in 2021. Windows 10 जो है वो initially free होती है for users of Windows 7 and Windows 8.1. Now कुछ new features जो है Windows 10 के वो हैं, सबसे पहले start menu. जो start menu होता है in the place from which you can open any program. आप start menu के अंदर से किसी भी प्रोग्राम को easily open कर सकते हो. टास्क बार, ये एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है हमारे डेस्कटॉप के बॉटम में जिसको हम टास्क बार बोलते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो पिन या फिर अनपिन एप्स ऑन द टास्क बार. एक्शन सेंटर एक ऐसी विंडो हो इज अ विंडो दैट अलाउज यू टू एक्सेस यूजफुल शॉर्टकट्स. आप इस सेंटर की वजह से यूजफुल शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हो एंड टूल्स का क्विकली. तो वेरियस सर्विसेज होती है जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, लोकेशन, ये सब अवेलेबल होते हैं इस एक्शन सेंटर में. देन वी हैव टैबलेट मोड. तो जो टैबलेट मोड होता है विंडोज 10 के अंदर ये अलाउ करता है हमें टू ओपन एप्स इन अ टैबलेट साइज विंडो. तो दिस फीचर इज वेरी यूजफुल फॉर पीपल जो यूज करते हैं कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन को. देन वी हैव वर्चुअल डेस्कटॉप. ऑन द टास्क बार हम सेलेक्ट कर सकते हैं डेस्कटॉप आइकन को टू क्रिएट अ न्यू डेस्कटॉप. यूज कर सकते हैं डेस्कटॉप को टू ओपन डिफरेंट एप्स जो डिपेंड करते हैं ऑन व्हाट यू आर डूइंग. फॉर एग्जांपल यू कैन क्रिएट अ ट्रेवल डेस्कटॉप. आप एक ट्रेवल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हो जो इंक्लूड करेगा वेबसाइट्स एंड एप्स दैट आर बेस्ड ऑन ट्रेवल. नाउ विंडोज सिक्योरिटी ऐप जो होता है ये बिल्ट होता है इनटू द ओएस.
यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ऐप हैज एन इजी टू यूज इंटरफेस जो कंबाइंड होता है विद कॉमनली यूज सिक्योरिटी फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, यू गेट एक्सेस टू वायरस, आप वायरस का एक्सेस ले सकते हो, एंड थ्रेड प्रोटेक्शन का, फायरवॉल का, एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, अकाउंट प्रोटेक्शन एंड मोर। नेक्स्ट आता है टास्क व्यू। तो टास्क व्यू जो फीचर है ये हमें अलाउ करता है टू क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप इन द सेम विंडो। यानी कि एक ही विंडो के अंदर जब आपको मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट करने होते हैं तो आप टास्क व्यू का यूज करते हो। टास्क व्यू जो है हम उसको ओपन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन टास्क व्यू फ्रॉम द टास्क बार। ये हमारी मदद करता है टू मैनेज all are open windows and switch between them easily. Using this feature आप create कर सकते हो different arrangements for your running apps and open programs. नेक्स्ट आता है स्नैप लेआउट। स्नैप लेआउट एक ऐसा फीचर है जो अलाउ करता है हमें टू कस्टमाइज द साइज ऑफ एप्स ऑन देयर डेस्कटॉप। इसको हम यूज करते हैं टू ओपन एंड वर्क ऑन अप टू 4 एप्लीकेशंस और विंडोज simultaneously on a single computer screen. So in the taskbar, when you hover over one of your apps, open apps, ये show करता है आपको all the apps in that layout, so you can get back to your work easily. To open Snap settings, follow these steps. सबसे पहले हमें टाइप या सर्च करना है स्नैप सेटिंग्स को इन विंडो सर्च बार एंड देन क्लिक ओपन। टर्न स्नैप विंडोज ऑन, हमें स्नैप विंडोज को ऑन करना होगा। देन आप सिलेक्ट कर सकते हो बॉक्सेस विच स्नैप्ड इफेक्ट यू वांट। देन नेक्स्ट वी हैव माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर है विच इज रिकमेंडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इट इज डिफॉल्ट वेब ब्राउजर। ये एक डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता है हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 के लिए। तो एज वॉज मेड टू रिप्लेस इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज था इसको इन्वेंट या डेवलप किया गया था कि हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस कर सके एंड रन फास्टर एंड विद मोर फीचर्स। तो माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर से ज्यादा फीचर्स प्रेजेंट है एज वेल एज ये उससे ज्यादा तेजी से वर्क करता है। ये हमें ऑफर करता है बेटर सिक्योरिटी एंड बेटर ऑर्गेनाइजेशन देन इंटरनेट एक्सप्लोरर एज वेल एज अ रीडिंग लिस्ट विच इज सिमिलर टू बुकमार्क्स। नाउ कॉन्टिनम क्या होता है? कॉन्टिनम मदद करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की टू अडेप्ट द वे अ डिवाइस इज बीइंग यूज्ड। यानी कि उस तरीके को अडेप्ट करने में मदद करता है हमारे कंप्यूटर की जिस तरीके से हमारा यूजर उसको यूज कर रहा है। एट अ मोमेंट a PC with a keyboard or a tablet with touch inputs in tablet mode, the start menu opens in full screen. टैबलेट मोड में जो मेन्यू होता है वो फुल स्क्रीन पे ओपन होता है along with the currently active window. टैबलेट मोड जो होता है ये मैक्सिमाइज कर देता है ऑल द एप्स, रिमूव कर देता है टास्क बार आइकन्स को एंड लीव ओनली एसेंशियल नोटिफिकेशन ट्रे आइटम्स। ये सिर्फ डिस्प्ले करेगा स्टार्ट बटन, बैक एरो, सर्च आइकन एंड द टास्क व्यू बटन। नेक्स्ट फॉन्ट्स क्या होते हैं? फॉन्ट्स वो कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी स्पेसिफिक डिजाइन या साइज के जिनको हम यूज करते हैं फॉर टाइपिंग टेक्स्ट। So various kind of fonts are available in the control panel. Some of them are Arial, Times New Roman, Impact, etc. हम also control panel का use कर सकते हैं to view, add or delete fonts. Now viewing fonts. Follow the given steps to view fonts. सबसे पहले open करना है control panel, then click on appearance and personalization option, which is this. After that, click on font option. आपको यहाँ से font option को choose करना है. The font window appears. डबल क्लिक ऑन एनी फॉन्ट। आपके पास एक फॉन्ट विंडो अपीयर होगी, यहाँ से आप किसी भी फॉन्ट पे डबल क्लिक कर सकते हो तो उसको आप फिर यूज कर सकते हो। नाउ एडिंग फॉन्ट्स। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ऐड फॉन्ट। ओपन दिस पीसी विंडो, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट ड्राइव एंड देन ओपन द फोल्डर दैट कंटेन न्यू फॉन्ट्स। आपको क्या करना है? दिस पीसी वाले ऑप्शन में जाना है और फिर एप्रोप्रिएट ड्राइव को ओपन करना है, ऐसे फोल्डर को जो आपके न्यू फॉन्ट्स को कंटेन करता है। Now choose the font that you want to add and drag it to the font window. Font will be added to the list. Next, deleting font. Follow the given steps to delete fonts. सबसे पहले आपको fonts choose करना है जिसको भी आपको delete करना है, then click on delete button. Now customizing the taskbar. The taskbar settings can be changed. जो taskbar होता है उसकी settings को हम change कर सकते हैं as per our needs. तो you can see the taskbar icon. आप taskbar icon को देख सकते हो and the start menu are left aligned by default.
जो हमारा टास्क बार होता है या स्टार्ट मेन्यू होता है, ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है. यू कैन मूव द स्टार्ट मेन्यू back to the left corner of the taskbar. You can also hide the taskbar and the items present on it. For customization, do the following steps. सबसे पहले हमें कंट्रोल पैनल पे जाना है, देन क्लिक ऑन अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन अगेन. देन आपको यहाँ पे टास्क बार एंड नेविगेशन को चूज करना है. सेटिंग विंडो अपीयर हो जाएगी आपके स्क्रीन पे. नाउ टू मूव द टास्क बार व्हाट यू विल डू इज फ्रॉम द सेटिंग विंडो आपको पर्सनलाइजेशन ऑप्शन को चूज करना है एंड आपको टास्क बार ओपन करना है. स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक करना है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन. नाउ ड्रॉप डाउन एरो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज राइट फ्रॉम द लिस्ट. आपको यहाँ से चूज करना है ऑप्शन जो यहाँ पे राइट है ऑन द लिस्ट. नाउ नेक्स्ट इज टू हाइड टास्क बार. आपको अगेन सेटिंग्स ओपन करनी है, पर्सनलाइजेशन ऑप्शन में जाना है, टास्क बार को चूज करना है एंड नाउ ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड और ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट मोड. दोनों में से किसी भी मोड को आप चूज कर सकते हो एंड यू विल चूज ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार. Now, as shown in the given picture, move the mouse pointer away from the taskbar. आपको अपने माउस पॉइंटर को टास्क बार से अलग लेके जाना है and the taskbar will be automatically hide. Next आता है configuring the mouse. So you can change the mouse settings as pointers type, pointer speed, pointer trail, double click speed according to your need. So for that we have some steps to follow. सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे जाना है, देन हार्डवेयर एंड साउंड को चूज करना है दिस टाइम विच इज दिस ऑप्शन एंड अ हार्डवेयर साउंड विंडो विल अपीयर. नाउ क्लिक ऑन माउस ऑप्शन फ्रॉम डिवाइस एंड प्रिंटर. डिवाइस एंड प्रिंटर में से आप माउस ऑप्शन को चूज करोगे. माउस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा ऑन द स्क्रीन विद मेनी टैब्स एंड ईच टैब कंटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ माउस. नेक्स्ट इज चेंजिंग द बटन कॉन्फ़िगरेशन. तो बटन कॉन्फ़िगरेशन हमारी मदद करती है टू click, double click and drag using the right mouse button. For example, if you are left-handed person, अगर आप left-handed person हो तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है चेक बॉक्स पे. If you are a right-handed person, then you do not click on the check box. अगर आप right-handed हो तो आप चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करोगे, left-handed हो तो आप करोगे. And to change button configuration, आपको क्लिक करना है switch primary and secondary button पे and then click on apply, then OK button. Now चेंजिंग द डबल क्लिकिंग स्पीड. जो डबल क्लिक स्पीड होती है उसको चेंज कैसे कर सकते हैं हम. यू कैन चेंज द स्पीड ऑफ डबल क्लिक एज स्लोअर एंड फास्टर. टू चेंज द डबल क्लिक स्पीड स्लोअर, अगर आपको डबल क्लिक की स्पीड स्लोअर करनी है तो व्हाट यू विल डू, क्लिक ऑन द पॉइंटर, मूव इट टूवर्ड्स द स्लो एंड योर प्रोग्राम विल ओपन आफ्टर लार्ज इंटरवल इन द डबल क्लिक. नेक्स्ट आता है टू चेंज डबल क्लिक स्पीड एज फास्टर. अगर हमें डबल क्लिक स्पीड को फास्टर करना है तो हम पॉइंटर पे क्लिक करेंगे, उसको फास्ट एंड की तरफ लेके जाएंगे. पॉइंटर टाइप को चेंज करने के लिए व्हाट वी विल डू, सबसे पहले पॉइंटर्स टैब में जाना है, देन चूज द पॉइंटर टाइप फ्रॉम द कस्टमाइज लिस्ट. कस्टमाइज लिस्ट में से हम पॉइंटर टाइप को चूज करेंगे, देन नॉर्मल सेलेक्ट को हमने यहाँ पे चूज कर लिया. फॉर एग्जाम्पल क्लिक ऑन द ब्राउज बटन, हमें फिर ब्राउज बटन को चूज करना है. A browse window appears on the screen with different types of pointers available on it and choose the pointer shape which you want and then click on OK. Now click on open button, replace pointer shape appear हो जाएगी in the place of original pointer shape in the customized list. Click on apply button and then OK button. Now configuring date and time. हम date और time को configure कैसे कर सकते हैं? Follow the given steps to change the date and time settings in your system. सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है, देन क्लिक ऑन द क्लॉक एंड रीजन ऑप्शन. क्लॉक एंड रीजन विंडो विल अपीयर. देन क्लिक ऑन डेट एंड टाइम ऑप्शन. डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके स्क्रीन पे. क्लिक ऑन चेंज डेट एंड टाइम बटन. डेट एंड टाइम सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर्ड ऑन योर स्क्रीन. Change the date and time settings. If you want to change the date, then change the month and year and day. अगर आपको डेट चेंज करनी है तो आप यहाँ से डेट, मंथ, डे, ईयर ये चेंज करोगे. अदरवाइज इफ यू वांट टू चेंज द टाइम देन आप चेंज करोगे आवर एंड मिनट सेटिंग्स. Similarly, you can also change the minutes. Click on OK button. Now we have a cool fact which is Windows 10 distinguishes between desktop and tablets. By default, users will be in desktop mode. जो users होंगे वो by default desktop mode में होंगे when using a keyboard and mouse. So users can switch to tablet mode. जो users हैं
वो डेस्कटॉप मोड से टैबलेट मोड को स्विच कर सकते हैं एट एनी टाइम इफ देयर कंप्यूटर हैज टच स्क्रीन. Let's revise the chapter. Start menu is the place from which you can open any program. Action Center is a window that allows you to access useful shortcuts and tools quickly. Task View feature allows us to create multiple desktops on the same windows. Snap Layout feature is used to open and work on up to 4 applications or windows simultaneously on a single computer screen. फॉन्ट वो कैरेक्टर्स होते हैं या किसी भी स्पेसिफिक डिजाइन और साइज के जिनको हम टाइपिंग करने के लिए यूज करते हैं टेक्स्ट, जैसे एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, इम्पैक्ट एटसेट्रा. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फॉन्ट्स. बटन कॉन्फ़िगरेशन मदद करती है हमें टू क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग यूजिंग द राइट माउस बटन. We can change the mouse settings such as pointers type, pointer speed, pointers tray. Let's do the exercise of the chapter. First is darken the correct option in the OMR sheet. OS stands for operating system, which is option B. The next is dash allows us to have several desktop open. It is task view, option A. Then dash feature allow us to customize the size of apps on their desktop, control panel, D. Then dash are the characters of specific design and size used for typing text, fonts. Horizontal bar at the bottom of desktop is known as taskbar. And then Windows 10 was released in 2016, which is option C. Now, fill in the blanks. Windows 10 was released in 2016. The Dash app is built into the OS. Windows security. Dash is a web browser recommended by Microsoft Edge. Button configuration helps you to click, double click and drag using the right mouse button. By default, the taskbar icon and start menu are left aligned. Next is true false. Task view features allow us to customize the size of apps on the desktop. True. In Windows 10, you can move the taskbar to the left corner of the screen. True. You cannot add font in Windows 10. False. We can hide the taskbar and its items present on it. True. Windows 10 distinguishes between desktop and tablets. True. So students, this was your complete chapter about advanced features of Windows 10. I hope it is clear to you. Do revise it again and also learn your exercise. I will see you in your next video for the next chapter. Till then, take care. Bye-bye.